Okay, so let's start latest IELTS listening practice test February 7th and 14th एग्जाम प्रैक्टिस। अगर आपने भी फरवरी में एग्जाम दिया है 7th ऑफ फरवरी को, तो आपको लिसनिंग किस तरीके की आई थी, रीडिंग कैसी आई थी, राइटिंग टास्क 1 2 क्या आया था, कुछ भी अगर आपको पता है, डू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि इससे दूसरों की हेल्प भी हो सके। फिलहाल जितनी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, तो इन इंडिया बेसिकली 7th फेब को जो कैम्ब्रिज लिसनिंग का पैटर्न था, वो काफी हद तक आपको लिसनिंग चेंज आई थी। वो चेंजेस क्या थे, वो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको लेके। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, फॉलो ए लॉन्ग वीडियो है, फॉलो ए लॉन्ग लिसनिंग कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट है, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। आपका स्कोर क्या रहता है, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस, एंड आप अपने साथ में नोटबुक रख लीजिए, एंड आपने इसके आंसर साथ साथ में आपने लिसनिंग को प्रैक्टिस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। So you have to concentrate fully on this listening. Okay. So without wasting time, let's get started. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a passenger and an official at the Land Transport Information Service at Toronto Airport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, this is Land Transport Information at Toronto Airport. How may I help you? Oh, good morning. I'm flying to Toronto Airport next week and I need to get to a town called, Milton. Could you tell me how I can get there? Milton, did you say? Let me see. I think that's about 150 miles southwest of here. In fact, it's 147 miles to be exact. So it'll take you at least, say, 3 to 4 hours by road. The distance from the airport to Milton is 147 miles, so 147 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, this is Land Transport Information at Toronto Airport. How may I help you? Oh, good morning. I'm flying to Toronto Airport next week and I need to get to a town called, Milton. Could you tell me how I can get there? Milton, did you say? Let me see. I think that's about 150 miles southwest of here. In fact, it's 147 miles to be exact. So it'll take you at least, say, 3 to 4 hours by road. Wow, is it as far as that? Yes, I'm afraid so. But you have a number of options to get you there, and you can always rent a car right here at the airport, of course. Right. Well, I don't really want to drive myself, so I'd like more information about public transport. Okay. In that case, the quickest and most comfortable is a cab, and of course there are always plenty available, but it'll cost you. You can also take a Greyhound bus, or there's an airport shuttle service to Milton. I think for that kind of distance, a cab would be way beyond my budget. But the bus sounds okay. Can you tell me how much that would cost? Sure. Let's see, that would be $15 one way, or $27.50 return. That's on the Greyhound. Ah, that's quite cheap. Great. Whereabouts does it stop in Milton? It goes directly from the airport here to the city center, and it's pretty fast.
But you have to bear in mind that there is only one departure a day, so it depends what time your flight gets in. Ah, of course. Hang on. Oh, we're due to get there at 11:30 a.m. Too bad. The bus leaves at 3:45, so you would have quite a wait, more than 4 hours. Oh, I see. Well, what about the shuttle you mentioned? Okay, that's the airport shuttle that will take you from the airport right to your hotel or private address. It's a door-to-door service, and it would suit you much better because there's one every 2 hours. So how much does that cost? Let's see. Yeah, that's $35 one way, $65 return. So I guess it's a bit more expensive than the Greyhound. Oh, that doesn't sound too bad, especially if it'll take me straight to the hotel. But you do need to reserve a seat. Okay. Is it possible to make a booking right now, through you? Sure. So now I hope आपने 1 to 5 सारे कर लिए हैं. Now let's discuss the answers first of all. And अगर आपने साथ में किया है, I would request all of you to just drop down your answers in the comment section below and just let me know आपका स्कोर कितना आया. And ये लेटेस्ट सबसे बड़ा चेंज है जो फिलहाल IDP ने करा है लिस्टिंग में. सबसे बड़ा इसमें चेंज आपने क्या देखा, ये वन वर्ड की ब्लैंक्स नहीं है. दीज आर आपकी नो मोर देन 3 वर्ड्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है आपका आंसर 3 वर्ड्स में ही आएगा. इट मे बी पॉसिबल कि आपका आंसर 3 वर्ड्स का भी हो, 2 वर्ड्स का भी हो, इवन कि 1 वर्ड का भी आपका हो सकता है. बट मेक श्योर कि 3 वर्ड से ज्यादा का आंसर आपका नहीं हो सकता इसमें. ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स 1 to 5. आपने भी कमेंट में जरूर बताना कि कितने आंसर सही हुए. ओके, सो डिस्कसिंग द आंसर. सबसे पहला जो फर्स्ट आंसर था आपका, तो फर्स्ट आंसर इज टैक्सी और कैब. ठीक है, ये आप इसको टैक्सी लिख सकते थे आपका फर्स्ट आंसर को, टैक्सी. Just a second. Okay, so first answer is taxi, or you can say a cab. Oh, I'm unable to write with my pen. Okay, let's try. Okay, it's not working. I don't know why. Okay, anyways, first answer is आपका taxi. Before you hear the rest Just a second. Okay. Anyways, okay, first answer of the is conversation, taxi. you have some सेकेंड आंसर इज सिटी सेंटर. सेंटर के स्पेलिंग दो आ सकते हैं, CENTRE या CENTER. स्पेलिंग सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम जो आपने अवॉइड करनी है. थर्ड इज वेट, WAIT. फोर्थ इज डोर टू डोर. अब ये दोनों के बीच में हाइफन आएगा, डोर के बाद भी हाइफन आएगा, टू के बाद भी हाइफन आएगा. फिफ्थ वन इज रिजर्व, यू नीड टू रिजर्व अ सीट. आई होप आपने इतना कर लिया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, I just have to fill this form out for you. So, what date do you want to book this for? The 16th of October. Oh, no. Sorry, that's my departure date. I arrive on the 17th, so book it for them, please. So, that's the Toronto Airport shuttle to Milton. And this is for just one person, or...? Yeah, just me, please. Right. And you said your expected time of arrival was 11:30? So if I book your shuttle for after 12, let's say 12:30, that should give you plenty of time to... Alka-Seltzer Plus Sinus Congestion and Pain Liquid Gels. Nothing works faster. You know, collect your baggage, maybe grab a coffee. Yeah, that sounds fine. As long as we land on time. Well, we'll take your flight details, so you don't need to worry too much about that. Now, what about the fare? What sort of ticket do you want? One way or... Yeah, that'll be fine, provided I can book the return trip once I'm there. No problem. Just allow a couple of days in advance to make sure you get a seat. And what is your name, please? Janet Thompson.
Is that Thompson spelled with a P? No, it's Thomson. Okay. And you'll be coming from the UK? What flight will you be traveling on? Oh, it's Air Canada flight number AC936 from London Heathrow. Right. Now, do you know where you'll be staying? We need to give the driver an address. Yes, it's called the Vacation Motel, and I think it's near the town centre. Anyway, the address is 24 Kitchener Street. That's Kitchener Street. That's fine. Right, so that's $35 to pay, please. Have you got your credit card number there? Yes, it's a Visa card, and the number is 3303 8450 2045 6837. Okay. Well, that seems to be everything. Have a good trip, and we'll see you in Toronto next week. Yes, bye. Oh, thanks for your help. So this is now the end of section 1. Now let's check from questions number 6 to 10 कितने किसके सही है मुझे कमेंट में जरूर बताना कि एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक आपका कितना स्कोर सही हुआ. अब यहाँ पर जो सिनेरियो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, वन वर्ड एंड और अ नंबर. दैट मीन्स या तो एक वन वर्ड का आंसर हो सकता है या एक नंबर का या वन वर्ड प्लस वन नंबर. एंड जो रिसेंटली आज 7th of Feb को टेस्ट हुआ उसमें ब्लैंक्स थे, उसके साथ कुछ मैचिंग दी इंफॉर्मेशन भी थे. अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है, आपको एग्जाम का पैटर्न क्या आया, आपकी एग्जाम की सिटी कौन सी थी, या आपने नेक्स्ट एग्जाम अगर आप वीडियो को देख रहे हो आप किस सिटी से देख रहे हो, आपने एग्जाम कब का बुक किया हुआ है, जो कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन. ओके, सो 6th आंसर है 17th of October. तो सिंपल आप इसको 170H 17th अक्टूबर पूरा लिखना है आपने, अक्टूबर की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है. सबसे बड़ी गलती जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है. 7th का जो आंसर है PM लिखा हुआ है तो सिर्फ 12.30 आंसर आएगा, 12.30. 8th इज थॉमसन, THOMSON. मेरा पेन यहाँ पे नहीं चल रहा है तो नहीं तो मैं आंसर यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देती. आई वुड हैव रिटन द आंसर्स बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पेन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा. आई डोंट नो व्हाई, सो आई एम जस्ट डिक्टेटिंग द स्पेलिंग्स. यू हैव टू जस्ट क्रॉस चेक योर स्पेलिंग्स. इसके बाद 9th आंसर इज A के साथ C आएगा कैपिटल्स में. इसके बाद 936. 10th आंसर बहुत लंबा नंबर है, आई विल रिपीट इट, 3303 8450 2045 68 एंड 73. तो ये थे आपके 1 से लेके 10 तक आंसर्स. अगर आपके जितना भी स्कोर आए डू कमेंट में. इसके साथ आपको प्रॉब्लम क्या आई इसमें वो भी मुझे ड्रॉप डाउन जरूर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियोस लेके आऊं आई विल बी फोकसिंग ऑन दी प्रॉब्लम एरियाज. आपकी किस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली लाइक, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर डेली अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड लेटेस्ट पैटर्न्स ऑन IELTS. So moving on to the next section. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Okay, so now हम move on कर रहे हैं next section 2 के ऊपर. हम आंसर्स Representative from a holiday company called PS Camping giving a talk about the holidays the company organises. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen and answer questions 11 to 16. Thank you all for coming to my talk this evening. It's nice to see so many people in the audience. For those of you who don't know very much about PS Camping,
Let me start by giving you some background information about the company. The company started 25 years ago. It actually opened as a retail chain selling camping equipment, and then, 20 years ago, it bought a small number of campsites in the UK and began offering camping holidays. The company grew rapidly and has been providing holidays in continental Europe for the last 15 years. If you book a camping holiday with us, you'll have a choice of over 300 sites. In Italy, we now have some 64 sites or have exclusive use of. France is where we have the majority of sites, and we currently have a project to expand into Switzerland. We also have a number of sites in northern Spain, particularly in the mountainous region of Picos de Europa. We've upgraded all these Spanish sites and improved them considerably from their original 3-star rating. We believe our holidays offer superb facilities for the whole family. Parents who want their children to be fully occupied for all or part of the day can take advantage of our children's activities. These are organised by our well-qualified and enthusiastic staff. Each day kicks off with a sports match, perhaps football or volleyball, followed by an hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other activities. In the afternoon, there's a different art activity for each day of the week, including a poster competition or model making. What's more, our sites are truly child-friendly, and with this in mind, we operate a no-noise rule in the evenings. Children's evening activities usually finish at 9:30 or occasionally 10, and from 10:30, holidaymakers are expected to be quiet in the areas where there are tents. We want nothing to go wrong on a PS camping holiday, but if it does, we also want all our customers to be insured. If you haven't organised an annual insurance policy of your own, you'll need to take out the low-cost cover we offer, and we require that you arrange this when you make your holiday reservation. There are many advantages to choosing PS Camping and to recommending it to others. As a regular customer, you'll be kept informed of special offers, and your friends can benefit from 10% off their holiday, or book a luxury tent for the price of a standard one. In return, we'll send you a thank you present, which you can choose from a list of high-quality items. Before you hear the Okay, I guess आपने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं. सबसे पहले we'll discuss the answers now. इसके बाद एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट देनी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है ऑब्वियसली. सो 11th का आंसर है आपका बी, दैट इज 20 ईयर्स. 12th का आंसर है आपका ए, दैट इज फ्रांस. 13th का आंसर है आपका बी, दैट इज ड्रामा. 14th का आंसर है आपका सी, दैट इज 10:30 PM. 15th का आंसर इज अगेन सी, मस्ट बी टेकन आउट एट द टाइम ऑफ बुकिंग. एंड 16th का आंसर इज ए, अ फ्री गिफ्ट. अगर आपके ये सारे मल्टीपल चॉइस के आंसर्स अभी सही हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि अभी जो 7th का एग्जाम आया मल्टीपल चॉइस, इसी तरीके के काफी ज्यादा इजी और शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. सो नेक्स्ट ट्राई करते हैं अभी क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं. rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. When it comes to our tents, these are equipped to the highest standard. We really do think of every essential detail, from an oven and cooking rings fueled by bottled gas to mirrors in the bedroom areas. If you don't want to cook indoors, you can borrow a barbecue if you ask in advance for one to be made available. And there's even a picnic blanket to sit on outside your tent. Inside, a box of games and toys can be found,
and children's tents can be hired if required. All tents have a fridge, and if you want to spend the day on the beach, for example, ask for a specially designed PS Camping cool box, which will keep your food and drinks chilled. There are excellent washing facilities at all our sites, with washing machines and clothes lines in the central areas, along with mops and buckets in case your tent needs cleaning during your stay. All sites have a cafe and or a shop for those who'd rather eat in than dine at a local restaurant. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Okay, so let's check the answers first of all from question number 17 to 20. अब एक आपके सामने बड़ी न्यूज ये है अगेन कि जो अभी आज 7th तक एग्जाम हुआ उसमें सेक्शन 1 में इसी तरीके के क्वेश्चंस आए थे मैचिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इन सेक्शन 1. अभी तक क्या फॉर्मेट चलता था 1 to 10 आपके ऑल ब्लैंक्स होते थे वन वर्ड के नॉर्मली, बट आज जो 7th तक एग्जाम हुआ उसमें आपको एग्जाम्पल्स में सबसे पहले ब्लैंक्स भी आए एग्जाम में इंडिया बेसिकली. कनाडा में कई जगह पर अभी भी एग्जाम चल रहा है. आई विल सून लेट यू नो अबाउट कि कनाडा में भी लिस्टिंग एक पैटर्न चेंज हुआ या सेम ही रहा, स्टैंडर्ड ही पैटर्न रहा. लेकिन इन इंडिया सेक्शन 1 में आपको इसी तरीके के जैसे 17 to 20 क्वेश्चंस है ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली इन सेक्शन 1, लेकिन वो काफी हद तक इजी भी थे. ओके, सो सबसे पहले आपके आंसर्स चेक कर लेते हैं. 17th का आंसर आपका सी आएगा, दे आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट. 18th का आंसर आपका ए आएगा, दे आर प्रोवाइडेड इन ऑल टेंस. 19th का आंसर इज अगेन सी, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट. एंड 20th का आंसर इज बी, दे आर फाउंड इन सेंट्रल एरियाज ऑफ द कैंप साइट. आपका स्कोर क्या रहा? डू कमेंट मी साइड बाय साइड इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3. अब इसके बारे में भी आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चंस आई विल गिव यू अनदर बिग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेटेस्ट IELTS पैटर्न. You have some time to look at questions 21 to 23. Now listen carefully and answer questions 21 to 23. Well, you've both been looking at different styles of managing individuals in companies and the workplace. How's the research going, Philip? I've been looking at why individual differences are such an important area of management studies. When you think about any organization, be it a family business or a multinational company, they're all fundamentally a group of people working together. But it's what these individuals contribute to their places of work that makes you realize how important they are. Of course, they bring different ideas, but it's also their attitudes and their experiences of learning. Diversity is important in these areas too. So why do people behave so differently from one another at work? There are lots of reasons, but research has shown that a lot of it comes down to personality. It's a well-known fact that men and women do lots of things in different ways, and the workplace is no different. Did you look at the effects of this variation on companies? Yes, I did. On the positive side, exposure to such diversity helps encourage which is generally an asset to a company. But unfortunately, individual differences are also the root of conflict between staff, and they can lead to difficulties for management, which can sometimes be serious. So I hope आपने ये ब्लैंक्स कर ली हैं. 21 का आंसर इज एटीट्यूड्स. मेन थिंग इज कि आपके यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए. एटीट्यूड्स की स्पेलिंग इसका आएगा आपका ATTITUDE. अब एटीट्यूड्स भी सही है, एटीट्यूड भी सही है. एटीट्यूड लिखा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर आपने एस लिखा है तो एस आना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडियाज भी यहाँ पे एस है प्लूरल, एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एस है. सो एटीट्यूड्स अगर आप सोचो तो वो सही है, एटीट्यूड भी खैर सही है. नेक्स्ट इसके बाद 22 का, एंड इसके बाद 23 का आंसर इज क्रिएटिविटी. CREATIVITY. अब जो लेटेस्ट आज इंडिया में एग्जाम हुआ, पहली
चीज नोटिस करने वाली ये थी कि जो आपका क्वालिटी ऑफ द साउंड था, स्पीड था लिसनिंग का, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, बिल्कुल भी लिसनिंग सेक्शन 3 में नहीं थी। एंड थर्ड एस्टॉनिशिंग जो चेंज आया लिसनिंग में इंडिया में आज एग्जाम में सेक्शन 3 जो था वो 21 to 30 दीज वर 2 वर्ड्स की ब्लैंक्स आपको आज एग्जाम में देखने को मिली। सो एग्जाम्स में आजकल जो भी ये ब्लैंक्स हैं ये ज्यादा कॉमन हो गई हैं इन आईएलटीएस लिसनिंग। सेक्शन 2 सबसे बिग चेंज था कि इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वाले मल्टीपल चॉइस या मैचिंग द इंफॉर्मेशन आपको ब्लैंक्स 21 to 30 सारी की सारी आपको ब्लैंक्स देखने को मिली। दैट इज रियली अ वेरी बिग चेंज एंड अ पॉजिटिव चेंज अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऑल्सो जो स्पीड थी दैट वाज क्वाइट नॉर्मल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 24 to 30. Imagine conducting every part of your research only on one platform. Meet Boreum, your AI-powered research computer. Now listen and answer questions 24 to 30. Thanks, Philip. So now I guess the two main things to remember here are to identify individual talent and then to utilize it. So, Janice, you were looking at identifying different talents in workers. Do you think this is easy for managers to do? Well, currently, teamwork is in fashion in the workplace, and in my opinion, the importance of the individual is generally neglected. What managers should be targeting is those employees who can take the lead in a situation and are not afraid to accept the idea of responsibility. That's true, Janice, but unfortunately, many managers think the entire notion of encouraging individuality amongst their staff is far too hard. Yes, that may be true, but I think one of the most important tasks of managers is to consider the needs of the individual on one hand and group cooperation and conformity on the other. It requires creative thinking on the part of management to avoid tension. So, Janice, what kind of people do you think companies should be looking for? Well, it has to start from the very beginning, when companies are looking for new employees. When the personnel department is choosing between applicants, they need to look for someone who's broken the mold and can think for themselves. Instead, people making these decisions often use a range of psychological tests to see if a person is a problem solver or will do as they're told. I'm not convinced these qualities are actually the most important. So, do you think being a good team player is overrated? No, it's not overrated. You do need to learn the rules and learn them fast. No individual can get around this if you're working in an organization. So how should managers deal with this? Rewards. When an individual demonstrates the behavior the organization expects, some kind of incentive can be given. What's important here is that this happens right at the beginning, so new recruits learn the rules of the system immediately. Also, the incentive should be something the individual actually wants, and this isn't always just money. To come back to you, Philip, you were saying that recognition of good performers is essential. Now, what else should managers be looking for? Well, managing people means you not only have an understanding of your employees, but you also recognize the culture of the organization. In fact, for some organizations, creativity and individuality may be the last thing they want to see during working hours. Very true. Yes, but managing people isn't as easy as it looks. For example, change in the workplace can be quite tricky.
especially if there's a need to increase profit. And at times like these, managers may have to give priority to profit rather than individual staff needs. Yes, and that creates difficult situations for people. Yes, but what's important is that managers are able to deal with quite high levels of personal stress. During times of change, they should be thinking not only about the strain on their staff, but take time out to think of themselves. Absolutely. So, what are the implications of... Okay, so this is the end of section 3 now. तो section 3 का ये pattern आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा कॉमन है. So let's discuss the answer. 24th का आंसर is A, potential leaders. 25 का आंसर is B, balance conflicting needs. 26 का आंसर is A, can think independently. 27th answer is again B, encourage cooperation early on. Blanks थे सिर्फ one word के. 28 का आंसर is culture, CULTURE. अगेन स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है इसका भी ध्यान रखना है. पेन से आपने ब्लैक पेन से एग्जाम करना है एंड आंसर शुड बी इन कैपिटल लेटर्स ओनली. 29 का आंसर इज प्रॉफिट, भी ठीक है, प्रॉफिट्स कर देते हो वो भी ठीक है, PROFIT और S लगाना है नहीं लगाना दोनों सही है आंसर्स. 30th का आंसर इज स्ट्रेस, STRESS. एंड आपके कितने आंसर सही हुए कमेंट में मेरे को जरूर बताना. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट या आप मेरे को चाहते हो कि आप ये प्रॉब्लम एरियाज हैं लिसनिंग में, आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके या सेक्शन को लेके एक वीडियो चाहते हो डिटेल में, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना. पॉसिबली नेक्स्ट वीक में लिसनिंग को लेके जो भी आपकी डाउट्स हैं प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगी. एंड आज ही रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया. He scored 9 in listening, 8 in reading. That was the Canadian result. 7.5 in writing and 8 again in speaking. I will be uploading his result soon on my YouTube channel as well. And ये जो ट्रिक्स है जो मैं सिखाती हूँ आपको on my YouTube channel वो बहुत ज़्यादा beneficial है. If you are new to my channel, do consider like, share and subscribing to my channel ताकि आपको लेटेस्ट जो है ट्रिप्स एंड ट्रिक्स आपके एग्जाम में क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगी. So moving on to the last fourth section, let's see आपका इसमें क्या स्कोर रहता है. Section 4. You will hear part of a lecture about cave paintings and other types of rock art. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon, everyone. This is the first seminar in preparation for our archaeological fieldwork in Namibia. We are fantastically lucky to have received partial research funding for this trip from our institute, so I shall expect 200% attention and participation from you all. First, in this seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art. And in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our fieldwork trip in April. So please listen very carefully. I'm first going to focus on the interpretation of rock art in Namibia. We are very fortunate to be going to an area where you can find some of the most important sites in the entire world. And I hope to show you how easy it is for everyone to make mistakes in looking at cultures which are different from our own, the first and most important lesson we have to learn. In Namibia, there are both paintings and engravings. That's where the surface of the rock is cut out. Many of the engravings show footprints of animals, and most scholars used to think that the purpose of these was simple and obvious. This rock art was like a school book with pictures to teach children about tracks, which track belonged to which animal, giraffe, lion, and so on.
But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks for the same animal. Well, you'd expect just one clear illustration if the reason, the aim, was to teach tracking. Now, there were two more problems. Why are some of the engravings of animals very accurate, as you'd expect, all clearly identifiable, and others quite unrealistic? And another mystery. Some of these unrealistic animals, that's in the engravings, seem to be half human. Some, for example, have got human faces. Many researchers now think that these were pictures the wise men engraved of themselves. They believed they could use magic to control the animals they had drawn, so the hunters could then catch them for food. This shows you some of the dangers of coming from one culture to another, as we'll be doing, without understanding it fully. Scholars imagine that children looked at rock art pictures to learn to track, just because they themselves had learnt skills from pictures. Many researchers now believe that rock art had a much more complex purpose, and we'll talk more about it next week. Now, before I invite you to join in a discussion in this second part of the seminar, I'd like to make some very important points about our fieldwork, and in fact any field trip to look at rock art. We're going to a number of sites, and we won't always be together. The single largest problem faced by people who manage the sites is, yes, I'm sure you've guessed, damage caused by visitors, even though it's usually unintentional. Whenever you do go to a site, don't forget you can learn many things from observing at a distance instead of walking all over it. This can really help to reduce visitor pressure. People often say, well, there's only two of us, and just this one time. But maybe thousands of people are saying the same thing. And then, some basic rules to guide you. We'll have our own camp near a village, but remember never to camp on a site if you go on your own. It may be disrespectful to the people of that culture, and certainly don't make fires, however romantic it may seem. It's really dangerous in dry areas, and you can easily burn priceless undiscovered material by doing so. So, how are we going to enjoy the rock art on our field trip? By looking at it, drawing it, and photographing it. Never by touching it or even tracing it. Rock art is fragile and precious. Remember that climbing on rocks and in caves can destroy in a moment what has lasted for centuries. So, no heroics in Namibia, please. Try to be extra careful and help others to be too. Oh, and lastly, please don't even move rocks or branches to take photographs. You should leave the site intact. I'm sure I can rely on you to do that. Well, that's about all I want to say before today's first discussion. But if you have any questions, please ask them now. Oh, and don't forget you'll find some fascinating information about worldwide sites on the internet. Right, first question then. Okay, so this is the end of section 4 now. 31st answer is April, A-P-R-I-L. Second, 32 answer is children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. Third is repeated, R-E-P-E-A-T-E-D. 34 is human, H-U-M-A-N. 35 is magic, M-A-G-I-C. 36 is distance, D-I-S-T-A-N-C-E. अब जहां पे आपके सामने फ्रॉम अ आ जाए, दैट मीन्स यहाँ पे पहली बात फ्रॉम मतलब कोई एक चीज लोकेशन की बात करें, फ्रॉम अ डिस्टेंस, अ मतलब सिंगुलर आंसर आएगा. 37 का आंसर इज कल्चर, C-U-L-T-U-R-E. 38 का आंसर फायर या F-I-R-E फायर, ये F-I-R-E-S फायर्स दोनों सही हैं. 38 का आंसर फायर. 39th इज टचिंग, T-O-U-C-H-I-N-G, टचिंग. एंड 40th आंसर इज इंटैक्ट, I-N-T-A-C-T. सो ये हैं सारे के सारे 40 तक आंसर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो अभी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में लेके डाउट है, या लिसनिंग को लेके या किसी भी मॉड्यूल के लेके अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन योर क्वायरीज, योर क्वेश्चंस, योर डाउट्स,
और आप क्या चाहते हो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊं, आपको किस चीज में डाउट है। अभी मेरे को एक किसी ने कमेंट भी किया कि लिसनिंग का सेक्शन 4 में स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स चाहिए, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली मैं एक अच्छी सी वीडियो जरूर लेके आऊंगी ताकि आपको सेक्शन 4 में भी कोई दिक्कत ना आए। नॉर्मली जो सेक्शन 4 का फॉर्मेट अभी भी चल रहा है दैट इज द सेम अगेन, फ्रॉम द क्वेश्चंस 31 टू 40 क्वेश्चन सारी ब्लैंक सी चल रही है, तो सेम पैटर्न ही चल रहा है अभी भी, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, एंड आपने अगर एग्जाम बुक कर रखा है तो किस दिन को अगर आपका एग्जाम है, किस डेट को आपने बुक किया है, आप कमेंट कर सकते हो मेरे को। So if you have any doubts again, you can comment me down your queries below, and let me show you the detailed answers now of these complete listening. So here is the answer key, you can check your answers अगर आपने लिखे हैं आपके answers with again the spellings, and once again जो आजकल पैटर्न चल रहा है वो यही पैटर्न चल रहा है, facing problem in choosing the correct letter. ओके मतलब ये जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है आप वो पूछ रहे हो ना। ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस राइट, वेरी मतलब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। अच्छा मल्टीपल चॉइस के लिए ना आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहली चीज इज जो फ्रेजेस वो यूज करते हैं। दूसरी चीज आपको पता है कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो हर एक ऑप्शन को अपने ऑडियो में ऐड करते ही करते हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा हमेशा फ्रेज यूज करके किसी भी पॉइंट को वो या तो एलिमिनेट कर देते हैं या तो उस पॉइंट को वो करेक्ट कर देते हैं। यू हैव टू फोकस एंड पे कंप्लीट अटेंशन ऑन दैट फ्रेज, नॉट ऑन दैट वो ऑप्शन बट मोर ऑन दैट फ्रेज। इसकी लिस्ट ऑफ फ्रेजेस भी आई ऑलरेडी हैव, you can just comment me or drop me a message on my WhatsApp number, that is 9646013307. This is my WhatsApp number, and आपको जो मल्टीपल चॉइस के लिए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस हैं, लिस्ट ऑफ जो कनेक्टर्स हैं या लिंकिंग वर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल चॉइस को सारे के सारे सही कर सकते हो, आपको ऑन योर WhatsApp टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके सो चूज द करेक्ट लेटर, दैट मीन्स मैचिंग इंफॉर्मेशन में दिक्कत है, एंड सेकेंडली मल्टीपल चॉइस में दिक्कत बोला, एंड लिसनिंग का पार्ट 4 ऑडियो समझ में नहीं आती, फाइन। इनके ऊपर डेफिनेटली आई बी कमिंग विद डिटेल वीडियोस, एंड नेक्स्ट वीक मैंने फिर से लाइव आना है। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं लाइव किस चीज के ऊपर वीडियो लेके आऊं, मेरे को वो भी कमेंट में जरूर बताओ कि आप क्या लोग चाहते हो कि लाइव की जो टॉपिक है नेक्स्ट लाइव का वो मेरा क्या होना चाहिए, एंड क्या आपको आज का लाइव का ये मॉक टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि हमने साथ ही साथ आंसर्स चेक कर लिए सारे, जैसे 1 to 5 किए 1 to 5 चेक कर लिए, ठीक है। तो आपको ये नेक्स्ट लाइव सेशन किस चीज का चाहिए, किस मॉड्यूल का चाहिए, वो भी को कमेंट में जरूर बताना, या यू आर मोस्ट वेलकम। एंड काइंडली लाइक दिस वीडियो, हाइप कर देना, शेयर कर देना। ओके रीडिंग लाइव, ओके लाइव रीडिंग भी कर देंगे, एंड आप एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग चाहते हो ये भी मेरे को कमेंट में जरूर बताया करो कि एकेडमिक की रीडिंग एंड जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग आर टोटली डिफरेंट। ओके थैंक यू सो मच डिम्पी शर्मा, थैंक यू सो मच। हाँ डेफिनेटली हम एक रीडिंग का सेशन रखेंगे बिल्कुल, एंड ऑल्सो जस्ट लेट मी नो कि एकेडमिक रीडिंग करना चाहते हो। ओके सो डिम्पी शर्मा यू आर आस्किंग फॉर एकेडमिक रीडिंग, डेफिनेटली फॉर श्योर नेक्स्ट वीक एक एकेडमिक रीडिंग का फुल मॉक टेस्ट जरूर आएगा। अभी आप लोग मॉक टेस्ट चाहते हो एकेडमिक रीडिंग का, या यू वांट मी टू एक्सप्लेन कंप्लीट रीडिंग टेस्ट, या सेक्शन वाइज चलूं, या आपको क्या मेन चीज में समझ आएगा। टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज अब देखो जो होती है ना बेसिकली डियर, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेके होती हैं, सेक्शन वाइज होती हैं, फुल रीडिंग वाइज भी होती हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप लोग फुल रीडिंग करना चाहते हो लाइव में, या पर्टिकुलर कोई सेक्शन 1 या सेक्शन 2 या सेक्शन 3,
या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना चाहते हो, लाइक मल्टीपल चॉइस इन रीडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन रीडिंग, बॉक्स वाले ब्लैंक्स, राइटर्स ओपिनियन, मैचिंग द इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स पर तो रिसेंटली मैंने वीडियो करी थी अपलोड। श्योर वीरपाल कौर मैम, रीडिंग ही लेके आऊंगी नेक्स्ट मैं वीक लाइव में। बट मेरे को नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दो कि अगर मैं रीडिंग लेके आऊं तो क्या आप लोग फुल रीडिंग करना पसंद करोगे? प्रैक्टिस, ओके। सो ओके, आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। जो मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगी नेक्स्ट वीक में, मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक लाइव में सेक्शन 1 की डिस्कशन करेंगे, सेकंड नेक्स्ट लाइव में सेक्शन 2 की, एंड थर्ड लाइव में सेक्शन 3 की डिस्कशन करेंगे। इज इट ओके? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। नोट कंप्लीशंस, ओके, हो जाएगा, डन। दैट मीन्स सेंटेंस कंप्लीशन हो जाएगा। एंड अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी कि मैंने जो आपको प्लान बताया अभी कि एक लाइव में सेक्शन 1 फुल, सेकेंड लाइव